Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. To start with Nifty, we are seeing that Nifty has closed flat in yesterday's session. This was more of because the Nifty is near to the resistance zone of 17,400, 17,500. If you look at the VIX is entered the 18 level. The close was 18.53, and the range of 18 to 20 is the level where the volatility will be high. If you look at the advanced decline ratio for the Nifty was 27 and 23. So which was again in little bit of on a cautious side. Coming to the put call ratio, the put call ratio has slipped from 1.49 to 1.38. This was one of the reasons why we faced the resistance in the Nifty futures. From the derivatives point of view, we saw the short covering in yesterday's session. So the buyers is little bit cautious on the Nifty. Having said this, the medium term view for the Nifty is quite, we are looking at on the higher side close to 17,800 levels. But just in case if the selling pressure comes and there is little selling pressure is seen, and during the day, if 17,200, not maybe during the day, in next 1 or 2 days, if 17,200 is broken, then there will be a loss of momentum. So that's the view for the Nifty. Whereas if you look at the Bank Nifty has added a long position, and even we have given a buy call in Bank Nifty in yesterday's session at 37,875 for the target price of 38,500. So we are quite positive on Bank Nifty. When even though the Nifty is seeing some amount of pressure, Bank Nifty is likely to outperform. SBI results are lined up on Saturday, and even the RBI policy is there. Maybe the prices are discounting this rally, so the bias is positive on Bank Nifty. Mm, If we come on to the FIs data, FIs they were long in cash, as well as domestic institutions were long. But coming to the futures data, FIs went short close to 31,000 contracts, and they are still overall they are long by 57% in the market in the index. Some of the long builders which were seen in yesterday's session was the Ashes Motor and the Tata Consumers and SBI. Overall, we have a positive view. We sense SBI and Canara Bank would be the counter from the PSU Bank, which might rally for the next 1 or 2 days. So bias is positive. The technical call for the day is we are again recommending a buy in Canara Bank in the range of 228 to 230 with the stop loss of 224 for the target of 239. Whereas the derivatives call for the day is the buy in Power Grid at the price of 222.50. This is a call option of 222.50 in the range of 4 to 5. The stop loss is 2 for the target of 9.5. Thank you, and over to Bhavish, sir. Yeah, hi, good morning, team. So, few results starting with Lemon Tree, which reported very strong results. Revenue stood at 192 crores, up nearly 356% YOY, led by a very high occupancy, which stood at 65%. So, this is significantly up because the previous year, same quarter was affected by COVID. So, no, the hotel business continues to do very well, and EBITDA margin also improved by nearly 27% QOQ to 46%. So overall, very strong results, and we'll have a call on Thursday, and post that we'll update uh, on the report. Second, Bajaj Consumer reported sales growth of 15% for the Q1 at 249 crores, but EBITDA margin was down by 29% YOY to 43 crores. So this is mainly because of the commodity price pressure, whether it's palm oil or crude oil, everything has gone up. So FMCG companies are also taking a hit. Third one, Moil. So Moil reported very strong results. Revenue up 28% to 375 crores, but EBITDA was higher by 77% to 148 crores. So very strong results from Moil. So benefiting out of strong rally in manganese ore prices that we have seen in the last 1 year. Then, apart from results, Indian Hotel has opened a new fifth hotel in Ahmedabad under the brand Ginger. So, company continues to open newer hotels, and we remain optimistic. Then HDFC Bank. So, for HDFC Bank, SEBI has granted an in principle approval to the merger, subject to certain conditions. This merger is ongoing with HDFC Limited. So, once this goes through, I think our banking analyst is quite positive on HDFC Bank. And then lastly, on credit card,
So the credit card data came out yesterday, so which it showed that there was a 25% growth in June compared to 23% growth reported in May. So, so cards continue to grow at a very strong rate, and mainly small finance banks are showing a very strong growth in credit card growth. Small finance banks by credit card was up nearly 12 times, while private banks reported 29% growth in credit card, and public sector banks were also was strong at 22%. The average spend per card in online e-commerce is at 8674, while point of sales stood at 5140 for the month. So that's it from me. Over to you, Brijesh and team. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. There are more further updates. Aurobindo firm has been issued a Form 83 with 3 observations. There was an inspection carried out at the facility at Bhimvaram in Andhra Pradesh, and 3 observations has been issued. Mahanagar Gas has also hiked their CNG price for second price hike by rupees 6 per kg for CNG and rupees 4 for PNG gases with immediate effect. And this has come at the rising natural gas pipes cost. In Zomato, Uber is likely going to offload its 7.8% stake, that is 61 crore shares, and that deal would be around $373 million, that is 2,939 crore at the rate of 48 to 54. So there would be very much volatility, and we should avoid trading in such stocks. There is an update on ITC. ITC has said that it has exited its lifestyle retailing business. This was made as a decision in the strategic review for the business portfolio in the June this year. And this was said by their chairman, Sanjeev Suri. And ONGC for government has again revised their windfall tax price on crude and diesel and ATF. So currently from 17,000 ton, it has raised to 17,750 per ton, while export taxes on jet fuel has been cut to 0 from rupees 4 per liter. So that would be from mine, and hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, team. Brigade came with the results. Results were very good. Revenue was almost 2.8 times, 902 crores versus 382 crores. Profit after tax was 87 crores versus loss of 40 crores. And their debt also reduced to 2,406 crores. M&M Finance gave an update to the exchange. Now it said it has dispersed 3,912 crores, 3% growth month on month, and year till date 13,385 crores, and their collection efficiency has improved in July 2022, which is standing at 97%. J. Kumar Infra, they came with the results. 994 crores is the revenue, which is higher by 47%. Profit after tax is higher by 93% at 62 crores. EBITDA margin at 10.9%, and gross debt is 469 crores. And they have a total order book of 12,095 crores. Order inflow this quarter was 1,374 crores. We are positive on infra stocks. I think KNR, Construction, PNC Infra, HG Infra are few stocks which we like in that space. CCA has cleared 4,500 crore deal between Bandhan Finance Holding and IDFC AMC. This is positive for IDFC Bank merger. I think a short-term rally in IDFC Bank, First Bank, is possible. And Indian employment, it has been the lowest in last 6 months at 6.8%. July, in month of July, CMIE data says. Now FMCG reported 10.9% growth in value terms in June quarter, which is positive for FMCG companies. Zomato, today there is going to be a block deal in Zomato. Almost 7.78% will be the deal size of the total equity, which is $373 million. And the seller will be Uber BV, which is exiting its total stake in Zomato. And yesterday I've seen some remark
where all loss-making companies have rallied, including Zomato, Paytm, PB Infotech, all these stocks have rallied. If you are holding this stock, use this rally to slowly exit if you are above cost or if you are having some profit, because even the lock-in period is getting over and many such sales will happen. Geo platform partners with Subex system with HyperSense AI, artificial intelligence to arguments is 5G product line, positive for Subex. RPG Live came with the results. Revenue was higher by 19% at 128 crores and profit after tax was higher by 30%. Moil, anyway, Bhavesh has tested. The result is very good. Voltas came with the results. Top line growth was 50% at 2,795 crores, but profit after tax was 110 crores and it is a drop of 10%. So I think, it is a huge disappointment. And we need to understand, all these air conditioning company, they import from China and they assemble in India. So due to lockdown in China, the impact has been big. But I think going forward, now China has opened up. Going forward, this much impact will not be there. So any correction in Voltas would be an opportunity to buy for a long-term investor. And Voltas has given few market share data also. In air condition, they have 24% market share, and in inverter market, they have 21.8%, and in HVAC, the ducting and internal air condition for malls and everything, they have an order book of 5,811 crores. Trade data came yesterday. Trade data not so good because your export has marginally come down at $35.2 billion. Whereas your import is moving higher, it was at 66 billion, and your trade deficit is at 31 billion, which is very high for us to manage. Government has revised windfall tax on crude produced domestically, and it has revised it upward for crude from 17,000 per ton to 17,750, negative for ONGC, Oil India, and Hindustan Oil Exploration, while they have cut the excise duty or the windfall tax on diesel. Diesel previously per liter it was 11 rupees, it has been cut to 5 rupees. These are for export. So no, that is positive. Jet fuel, they have made it nil, and petrol, it was already no tax, it is again no tax. So it is very positive for Reliance, and even Bold SR Oil, it is in a different name, so that company, but it is not listed. So Reliance is a major beneficiary. We can see some rally in Reliance. Mumbai CNG and PNG prices increase. 6 rupees is the increase on CNG, which stands at 86 rupees, and PNG is increased by 4 rupees. It stands at 52 rupees 50 paisa. Bank of India came with the results. Results were very disappointing. The profit after tax was down at 22% at 561 crores. Revenue was marginally lower at 11,124 crores. It was due to higher provisioning. So in PSU pack, we like 3 stocks. The best one is Can Bank, followed by Bank of Baroda and State Bank of India. This is where any correction would be an opportunity to buy. Siemens came with a fantastic results. Their revenue was higher by 59% at 4,258 crores. Profit after tax higher by 112% at 300 crores, and EBITDA margin at 9.6%. We have been positive on capital goods as a pack. So in that we like ABB, Siemens, even Bosch was a very good results. So even Bosch we like it. Now Cummins is one more stock. Apar Industries is one thing which is moving higher. AIA Engineering. These are few stocks we like in this capital goods space. Asalia Solution, they are into airline data management and other services.
they also reported fantastic results. Their revenue was higher by 24% at 91 crores. Profit after tax was higher by 58% at 27 crores. One quarter EPS is 18. So I think the year they will end at 60 rupees EPS. But we need to understand, after 2 years of COVID, now the airline traffic has become normal. So that means this company will be a major beneficiary. 2 years they were in a bad time. Now they have come out of that. Deepak Nitrate came with results. Revenue was higher by 35% at 2,057 crores. EBITDA margin was 17%, but profit after tax was down 22% at 234 crores. Why the revenue growth has been seen? Why the margins are very low? Why they have the profit after tax is reduced? We need to understand it better. So Deepak Nitrate at this point of time is avoid. Maybe in next 2 days we will update there. And Oro Pharma, US FDA has inspected 2 pharma companies. Oro Pharma, they had 3 observations, which is negative, and Jubilant Pharmova, again 6 observations, which is also negative. With that, over to you, Sitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट जो है लेमन ट्री के नंबर्स आए थे. रेवेन्यू जो था वो 1.9 बिलियन है. ईयर ऑन ईयर 355% से इंक्रीज हुआ है. 60% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है. उनका जो एबिटा मार्जिन है वो भी 45% से इंक्रीज होके 2759 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है. नेट प्रॉफिट है वो 0.1 बिलियन से इंक्रीज हुआ है. जैसे होटल सेक्टर के नंबर्स काफी अच्छे हैं तो लेमन ट्री के में नंबर्स अच्छे ही आए हैं. नेक्स्ट अपडेट है सेबी ने जो मर्जर है एचडीएफसी बैंक का उसके लिए ग्रांट दे दी है. जो उनका प्रिंसिपल है उसके लिए अप्रूवल आ गया है. क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है उसमें आउटस्टैंडिंग कंटिन्यू जो इम्प्रूवमेंट दिख रही है जून मंथ में भी देखा गया. तो अभी वो ग्रो हो चुका है ईयर ऑन ईयर 25.3% से, जो कि लास्ट ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 23.21 था. सो इम्प्रूवमेंट जो है वो ग्रोथ नंबर आया है वो आउटस्टैंडिंग आया है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक से उससे 1208% का इंक्रीज हुआ है. प्राइवेट बैंक ने रिपोर्ट किया है 28.6% ईयर ऑन ईयर और पब्लिक बैंक है उन्होंने रिपोर्ट किया है 22% ईयर ऑन ईयर. सो एवरेज स्पेंड है पर क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है अभी वो है फिलहाल 8674 और जो पीओएस स्टूड है अभी 5140. नेक्स्ट अपडेट है बजाज कंज्यूमर के ऊपर. बजाज कंज्यूमर्स के नंबर्स आए. नेट सेल जो था वो 249 करोड़ है जो 15% से अप है. क्वार्टरली उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 33.89 करोड़ है जो डाउन है 30% से. और उनका इबिटा अभी है 43.15 करोड़ जो वो भी डाउन है 28% से. तो बजाज कंज्यूमर का ईपीएस अभी डिक्रीज होकर 2.3 है जून मंथ में. नेक्स्ट अपडेट है मॉइल के ऊपर. मॉल के भी नंबर्स आए थे. उनका एबिटा अप हुआ है 77% से 147 करोड़ और एबिटा मार्जिन भी 39% से इंक्रीज हुआ है. नेट प्रॉफिट उनका काफी इंक्रीज होकर 66% आया है और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 102.78 करोड़ है जो कि हम लोग प्रीवियस इसे कंपेयर करें तो वो 61 करोड़ ही था. तो ओवरऑल मॉल के नंबर से वो काफी अच्छे आए हैं. नेक्स्ट अपडेट है महानगर गैस के ऊपर. जो मुंबई सिटी है उनके जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अनाउंस किया कि वो सेकंड प्राइस हाइक लेने वाले हैं. तो 6 रुपीज पर केजी सीएनजी में उन्होंने हाइक ली है जो अभी सीएनजी 86 रुपीज है और पीएनजी है वो 4 रुपीज से हाइक ली है और कुछ 52.5 के रेंज में है. सो ये जो प्राइस है उसका हाइक इमीडिएट इफेक्ट से मतलब जल्दी होगा. और नेक्स्ट अपडेट है फार्मा सेक्टर के ऊपर. सीसीआई मतलब जो ऑरो फार्मा है उसके ऊपर फर्स्ट अपडेट है कि जो यूएस हेल्थ रेगुलेटर है यूएसएफडी उन्होंने फॉर्म 83 जो 3 ऑब्जर्वेशन है इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए उनका जो आंध्र प्रदेश में फैसिलिटी है वहां पे लिए इंस्पेक्शन के लिए दिया गया है. तो ये एक नेगेटिव है. सेम वैसे ही जुबिलियंट फार्मा के लिए भी ये नेगेटिव न्यूज है क्योंकि उनके जो 6 ऑब्जर्वेशन है
उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए दिया गया, तो ये नेगेटिव है जुबिलेंट फार्मा एंड और फार्मा के लिए। आईटीसी के ऊपर अपडेट है कि आईटीसी की जो लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस है वो अभी डिसीजन है कि वो आफ्टर स्ट्रेटेजिक रिव्यू उनका पोर्टफोलियो करने के बाद आईटीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि वो स्लाइटली की चेंजेस करेंगे लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में, तो और रिस्ट्रक्चर करेंगे ये बिजनेस को ये ईयर में। नेक्स्ट अपडेट है कि गवर्नमेंट ने जो अभी जो विंडफॉल प्राइस है, विंडफॉल टैक्स है, उसके ऊपर अपडेट है कि एक तो पहले तो उन्होंने क्रूड और डीजल एंड जेट फ्यूल के लिए लीवे कर दिया है, तो ये पॉजिटिव रहेगा रिलायंस के लिए। बट अभी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल है उसका जो रेस है वो किया है 17,750, जो पहले 17,000 पर टन था, तो ये निगेटिव रहेगा जो ओएनजीसी के लिए, ऑयल इंडिया जैसे कंपनी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स आए थे, नंबर्स में रेवेन्यू लोअर आया है 11,124 करोड़ के अराउंड, तो नंबर्स इतने कुछ ओकेश आए। तो पीएसयू सेगमेंट में हम लोग प्रेफर करेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों बैंक में करेक्शन मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सीमेंस के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे आए थे, रेवेन्यू 59% से इंक्रीज होके 4,258 करोड़ है, पैट भी 122% से इंक्रीज होके 300 करोड़ आया है। हम लोग पॉजिटिव है कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसके ऊपर, तो आप ये सेक्टर में एबीबी, सीमेंस, बॉश के भी नंबर्स काफी अच्छे आए। क्यों मीन्स अपार इंडस्ट्री जो अभी मूव कर रहा है हायर इसमें एआई इंजीनियरिंग, तो आप ये स्टॉक देख सकते हो। एसएलिया सॉल्यूशन है जो एयरलाइन के इसमें है, उसके भी नंबर्स काफी अच्छा है, रेवेन्यू 24% से इंक्रीज होकर 91 करोड़ आया है, पैट भी अप्रॉक्स 58% से इंक्रीज होकर 27 करोड़ आया है, उनका ईपीएस अभी 18 रुपीज है। तो ओवरऑल अभी 2 इयर्स कोविड के बाद एयरलाइन ट्रैफिक है वो नॉर्मल हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। दीपक नाइट्रेट के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू है वो 257 करोड़ है, उनका पैट जो है वो डाउन हुआ है 22% से 234 करोड़। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इनका पैट किस वजह से लोअर इतना है, तो हम लोग 2 दिन में इसके ऊपर अपडेट देंगे, तब तक के लिए ये स्टॉक को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अपडेट है एमएनएम फाइनेंस के भी नंबर्स आए थे, अपडेट आया था, उसपे मंथ ऑन मंथ 3% की ग्रोथ दिखाई है, और जो उनका कलेक्शन एफिशिएंसी है वो जुलाई में 97% से इंक्रीज हुआ है। जेके इंफ्रा के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, पैट जो है वो 62 करोड़ है, और जो उनका एबिटा मार्जिन है वो 119 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। और ये हम लोग पॉजिटिव है इंफ्रा सेगमेंट में, तो आप इंफ्रा में केएनआर इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा और एचजी इंफ्रा जिसको हम लोग पसंद करते हैं वो स्टॉक को देख सकते हो। सीसीआई ने क्लियर किया है कि बंधन बैंक और आईडीएफसी एएमसी के जो इशू था उसके लिए, आईडीएफसी एएमसी होल्डिंग का जो इशू था उसके लिए, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, तो इसमें रैली हम लोग देख सकते हैं, तो आप ये स्टॉक को देख सकते हो। एफएमसीजी कंपनी है, उन्होंने मतलब जो डेटा आता है, रिपोर्ट आता है, उसमें 10.9% ग्रोथ जुलाई मंथ में रिपोर्ट की है, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा एफएमसीजी कंपनीज के लिए। जियो ने पार्टनर किया है सुबेक्स के साथ, सो तो एक पॉजिटिव है सुबेक्स के लिए। आरपीजी लाइफ है, उनके भी नंबर्स आया था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 19% से 128 करोड़, पैट भी 30% से इंक्रीज हुआ है। मॉइल के तो नंबर्स अच्छे ही आए, मैंने पहले ही अपडेट कर दिया। वोल्टास के नंबर्स आए थे पर रिजल्ट इतना कुछ अच्छा नहीं आया है, मतलब बेसिकली उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए कि इम्पोर्ट, बेसिकली आपको जानना है कि जो एयर कंडीशन रिलेटेड कंपनीज है वो जो पार्ट्स है वो इंपोर्ट करती है चाइना से और असेंबल करती है इंडिया में, सो चाइना में लॉकडाउन होने के कारण उसका इम्पैक्ट ये सेगमेंट में देखा गया। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कभी भी करेक्शन आए तो वोल्टास को बाय कर सकते हो, और उनका जो इन्वेंट्री मार्केट शेयर है वो 28% है, और ऑर्डर बुक जो है कुछ अराउंड अच्छी खासी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव है, तो एनी करेक्शन आएगा तो आप बाय कर सकते हो। और जो 52 वीक लो स्टॉक है जैसे कि जोमेटो है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है वो कल बहुत रैली कर चुके हैं, तो आपको ये रैली को यूज करना है ऐसे जो स्टॉक इफ इनकेस प्लान के पास और किसी के अकाउंट में पड़े रहेंगे, तो ये रैली को यूज करना है एक्सिट करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉन कॉल, हैव अ नाइस डे।